Assalamu alaikum Ahmed or Ami. So we were waiting for some people to join. Um, हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा मॉक इंटरव्यू कर रहे हैं। अरीब का एक इंटरव्यू होने वाला है, तो ही विल आई पोस्ट सम क्वेश्चंस जिसका मैं उससे कुछ आंसर एक्सपेक्ट करूँगा और देखूंगा कि वो किस तरीके से, अगर वो सही हुआ तो बता दूंगा उसने क्या सही किया है, और कुछ गलत हुआ तो बता दूंगा उसको कैसे करना है। पहली कॉल में हम अरीब के साथ कर रहे हैं बिकॉज ही इज़ कम्फर्टेबल, बट फॉलोइंग वीक, मतलब जो नेक्स्ट संडे आएगा उसमें हम किसी और को उठाएंगे और फॉर्मेट ऑलमोस्ट ये रखेंगे, बट वील इम्प्रूव ऑन फीडबैक। तो अरीब, आई नो यू विल बी हैविंग ए स्क्रीनिंग कॉल वेरी सून, और उसमें एक रिक्रूटर जो अप्रोच करेगा तुम्हें, वो बेसिकली इस तरीके से अप्रोच करेगा कि हेलो, एम आई टॉकिंग टू मोहम्मद? Yeah, exactly. We're talking to. आवाज़ नहीं आ रही। Oh, पहली चीज़, मेक श्योर योर वॉइस इज़ वर्किंग। can you hear me? थोड़ा ज़ोर से बोलो, चल जाएगी। Can you hear me now? सो एम आई टॉकिंग टू मोहम्मद? Yep, you're talking to Reed. Hi, Arif. Sorry for your mispronouncing your name. That's fine. Is this a good time to talk? I saw you applied for a position in our company. Can we talk right now? Yeah, sure. So I wanted to give a brief overview of what Intuit is and what the role we are looking for. So Intuit is a major player in making accounting and bookkeeping software. So we are currently looking for a front-end developer, and you will be working closely with our design and backend teams to build seamless, high-performance user interfaces. मेरे पास लिखा हुआ है ये। Could you share a bit more about your experience with React and recent projects you have done? Tell me about yourself. Okay, yeah, sure thing. So, I've been working as a full stack since the past few years. I've been a part of multiple companies in which my role was either focused on back. I was working as a backend heavy full stack or a front end heavy full stack. Mm-hmm. Um, I graduated from Fast University in Pakistan here in 2022, and I've been working since 2022. Um, Mm-hmm. as a React developer, so after an year working in the industry, I got a full senior full stack role at Bytecorp. Mm-hmm. Um, my main professional experience started from there. So I had like 2 3 projects in which the front end was based on React and React and TypeScript. Mm-hmm. So those websites were mainly management portals. So different kind of management portals. So the first one was for managing vehicles and their orders and stuff like that. But I've also worked on creating some static websites as well. Haven't really worked with server-side rendering in React that was just introduced, but yeah, that's it. Okay. It was a good answer, but दो तीन मसले हैं। पहले ही कि you were not excited. Thank you for reaching out. Glad to be here, whatever. सही है, मतलब you have to sound human. Yeah, sure, foreign से start नहीं करना है. Thank you for reaching out. Yeah, I did apply through this. I'm looking for a Mm, front-end position. As far as my experience goes with React, फिर तुम शुरू हो गया अपना experience. mm, सही है। और विद इन द एक्सपीरियंस तुमने सिर्फ प्रोजेक्ट का एक पार्ट बताया कि मैंने मैनेजमेंट पोर्टल्स बनाए थे, बजाय इसके कि तुम बोलो कि मैंने फुल स्टैक पे भी काम किया और बैक एंड पे भी काम किया। उसने शुरू में ही बता दिया था तुम्हें पोजीशन जो है वो रिएक्ट की है। mm. तो नाउ योर जॉब इज टू मेक श्योर यू ब्रिंग आउट एवरी एक्सपीरियंस यू हैव विद रिएक्ट। Okay. समझे? मतलब भले तुमने मैनेजमेंट पोर्टल बनाया हो, लेकिन मैनेजमेंट पोर्टल इतना बड़ा होता है, तुमने बहुत सारी चीज़ उसमें की Mm, होंगी। तो डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट व्हाट यू डिड, कि व्हाट यू डिड, मतलब ये नहीं कि मैनेजमेंट पोर्टल बनाया वो गाड़ियों की बुकिंग करता था। बोलो मैंने mm. बनाया एक ऐसा जो कि हेल्प क्लाइंट्स के वो ये बुकिंग करें और ये करें, तो सीमलेस ऑपरेशन हुआ। फिर उसके साथ मैंने डिज़ाइन के साथ काम किया था, ये सारी चीज़ें करी थी। सही Okay. है। व्हाट यू मिस्ड इसके, मैंने शुरू में बोला था यू विल बी क्लोजली वर्किंग विद द डिज़ाइन टीम्स एंड बैक एंड टीम्स। तो बताओ मैंने डिज़ाइनर के साथ क्या काम किया, बैक एंड के साथ कैसे कोलैबोरेट किया। तो दैट वुड सेट कि हाँ यार, ये बंदा है जो जो मुझे चाहिए। Mm. उसके बाद वो आगे पूछेगी कि भाई, या Understand. पूछेगी या पूछेगा कि ओके, टेल मी अ बिट मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट व्हाट यू डिड। सो फॉर एग्जांपल,
Can you elaborate what you did with the management portal and how you worked with your team? What was your role? Yeah, definitely. So let me tell you a bit about the project first. Mhm. So, my team was building an ecosystem for automating the whole electric vehicles industry, right? So we had to have a lot of portals where dealers can sign up and they can add their inventory, and individual customers or manufacturers themselves, they can sign up and then they can order those vehicles in bulk, or Mhm. or if I'm just an individual, so I'll just order like that. Mhm. So it had to be a whole lot of portals. What we were doing was to create a single project through which we can create multiple portals, right? So it was Okay. supposed to be kind of a private white label thing for that. What I did in that project was first set the base. So that means that I created the project structure and started with integrating all the other libraries that I need to have in the project, right? So that includes Mhm. the state management part of it, which was done on Redux. That also includes the unit testing part of it. That was done through the React testing library. Mhm. Um, Apart from that, we did use a lot of shared components that we built in house. So we had the liberty of we had the chance to create some open source stuff there as well. So that was also purely in-house developed, and I was a major part of it because I was being the senior there. I had to lead some of the small projects there. So, and then obviously I had to collaborate with the design team very frequently because they had to know the technical feasibility of stuff that they were designing, and Mhm. I had to give my input in what's feasible and what's not. And the backend collaboration was pretty much straightforward because the backend team was really good. They had all their APIs documented. So I had to collaborate whenever there was some kind of miscommunication. Like I was told that an API was supposed to do this, but it was doing something else. Stuff like that. So Interesting. yeah. Good, good. This is what we were looking for. So let's move on to some behavioral questions. ये मतलब जो अभी तक पार्ट था वो स्क्रीनिंग कॉल्स में होता है बेसिकली कि वो जज करते हैं आपको कि हाउ व्हाट योर एक्सपीरियंस इज। उसमें हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में जाते भी नहीं है कि मैंने मतलब ये कीवर्ड्स यूज़ करना ज़रूरी है, रिडक्स, यूनिट टेस्टिंग, जेस्ट, क्योंकि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में होते हैं ये। तो दे विल मैच कि भाई बंदे के पास वो प्रोफाइल है भी या नहीं। लेकिन कि माइक्रो फ्रंट एंड्स बनाए कि उसमें मैंने ये सारी चीज़ें करी थी, इट्स गुड बट कीप इट शॉर्ट, क्योंकि वो मतलब वो एचआर का बंदा उसको पता नहीं है। अब टेक्निकल इंटरव्यूज तो मोस्टली लोग कर लेते हैं। द की पॉइंट देयर इज टू जस्ट स्पीक आउट लाउड व्हेन यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। जहाँ फंसते हैं वो बिहेवियरल होता है। तो टेक्निकल भी करेंगे बाद में, बट लेट्स फोकस ऑन सम बिहेवियरल क्वेश्चंस के। टेल मी अबाउट अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट यू वर्कड ऑन, हाउ डिड यू अप्रोच इट एंड व्हाट वाज द आउटकम? A challenge it is like okay. So again, this was when I was in White again. So they already had a product that was developed, right? It was an IoT based product. So the IoT device itself was installed in the trucks, where in a fleet of trucks, and the fleet manager can monitor the driver and the truck metrics of through a portal or through an online portal. The problem was that the device was really buggy. So we would have totally random issues out of nowhere. It would work perfectly fine in the office in the development environment, but as soon as we deployed in a truck, it was really bad. So the product manager there asked me to come in and rehaul the whole system. Okay. And rehauling was because I have to basically design it from scratch. So it was a big problem. My approach in solving that problem was to focus on one thing at a time. So I started to list down all the stuff that there is in the current system, and then I found out what's the crux, like what's the main core thing that I have to start with, and that was the IoT device itself, right? So then I dig deeper into it. I saw what are the challenges right now. Why are we using Python right now for it?
why are we not using anything else for it? So there were a lot of design decisions that were made just because the expertise in the team at that moment, at that time, Mhm. was just that. So Mhm. now I had the liberty to, actually research about the problems and then figure out what's the correct technology stack. So there's the first part that I figured out what what to use to build. The next part was I asked the product manager, what exactly do you want in the initial phases of this Mhm. eval? So there I got my requirements. Right. So he said I need the GPS, I need the speed, stuff like that. Mhm. Like, okay, so I chose the tech stack, I got the requirements, I built a very small, quick POC just Mhm. so we can, deploy it in a car and see if it's working. And then this is the pipeline that I use to gradually increase the features because I knew that if I create the whole system first in Office, it's going to create the Mhm. same problems. So this was my gradual process in which I got the requirements gradually and then feature by feature I tried it in Office and then deployed it. So we were able to make it really stable. And then we also finalized 2 pilots for that project. So Okay. How I would answer this question. So अगर याद हो कि कल की कॉल में रफ़ाइल भाई ने बोला था there is a methodology called STAR, uh, which is situation, task, action, result. तो situation you defined it, but उसमें जो मैंने चैलेंज पूछा था मुझे पता नहीं है अभी तक कि इसमें चैलेंज क्या है. सही. You could have said कि we had already deployed our solution, the client was unhappy, we had a limited time to solve this problem. और ये कम्युनिकेट करना था मुझे अपनी हायर अथॉरिटीज़ को. तो यहाँ पे तुमने चैलेंज डिस्क्राइब कर दिया. मेरे पास सॉल्यूशन ऑलरेडी डिप्लॉयड था, क्लाइंट को हम दे चुके थे और लिमिटेड टाइम था, बट हम उसको इतनी जल्दी सॉल्व कर नहीं सकते थे. तो मैंने हायर अथॉरिटीज़ को बताया और ये अप्रोच ली. अब टास्क क्या था? टास्क वाज टू मेक श्योर वी डिप्लॉय अ न्यू सिस्टम टू मेक इट स्टेबल एंड मेक अ क्लाइंट हैप्पी. फिर तुमने एक्शन लिया विच इज़ के आई ऑनबोर्डेड माई अथॉरिटीज़, जो भी ऊपर वाले लेवल थे, उनको बताया कि मेरा प्लान क्या है. माई प्लान वॉज दिस, कि okay, रिसर्च so व्हाट टेक्नोलॉजीज टू यूज़. और फिर उससे रिजल्ट ही आया. सही है. so yeah, मतलब the रिजल्ट, problem तुमने रिजल्ट वाला basically. पार्ट भी मिस किया था कि वी अचीव्ड इट इन सम वे और अदर. So मेरी अंडरस्टैंडिंग असल में फिर इसमें गलती हुई कि they were looking for, as you said, it was a behavioral question. I took it as a technical. So इट डजेंट हैव टू बी, मतलब कि बिहेवियरल है तो टोटली बिहेवियरल होना चाहिए. मतलब वो जो मैनेजर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो टेक्निकल पीपल. जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, नॉट द रिक्रूटर बट द हायरिंग मैनेजर्स, दे आर मोस्टली दे आर टेक्निकल पीपल. फॉर एग्जाम्पल रफाइल भाई, ही इज़ अ वेरी टेक्निकल पर्सन. सही है. अगर मैं कोई हायरिंग करूँगा या तुम जैसे बाइट कॉर्प में कोई हायरिंग करते थे, यू आर प्लेइंग हायरिंग मैनेजर रोल. सही है. तो दे आर टेक्निकल, दे अंडरस्टैंड व्हाट दैट इज. सो आगे जाके दो पाथ हो जाते हैं बेसिकली, एक स्टाफ इंजीनियर का, एक मैनेजर का. ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में दोनों सेम होते हैं, बट स्टाफ इज जस्ट मोर प्रोग्रामिंग फोकस्ड और टेक्निकल लीड होता है. मैनेजर इज मोर लाइक रिसोर्स मैनेजमेंट वगैरह. तो दे बोथ नो टेक्निकल टर्म्स, बट यू हैव लाइक इन एनी वे यू हैव टू यूज द स्टार मेथड. सही है. एक और चीज़, your challenge doesn't have to be a technical challenge. um, it can be a time constraint, it can be learning a new technology, या कोई ऐसा फ्रेमवर्क चूज कर लिया कंपनी ने जिसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी. इट कैन बी एनी चैलेंज, यू जस्ट हैव टू फ्रेम इट लाइक अ चैलेंज. सही है. that makes a lot of sense. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास चैलेंज आया था कि आई वाज न्यू इन द कंपनी. मैं सिचुएशन कैसे बता रहा हूँ. आई वाज न्यू इन द कंपनी एंड वी हैड टू डिलीवर. द कंपनी हैज ऑल had already promised a project to deliver by December. I joined the company in October. The current lead was leaving, so I was forced into the lead position. And when I got into it, I came to know that the actual project will take 1 year to complete. समझे? The challenge is crisply defined कि भाई क्या सीन है. Got it. दूसरों को कोई क्वेश्चंस है राइट नाउ? Cool. Let's move on to the next. हाँ, sorry. जानने क्वेश्चन है लेकिन वो इंटरव्यू स्पेसिफिक नहीं है तो मैं बाद में पूछ लूंगा. Okay. Um,
Describe a time when you had to work with a difficult team member. How did you handle the situation? Uh, how did I handle the situation? So by that you mean, how did I cope up with that working with that team member? Um, हाँ मतलब कि कोई सिचुएशन आई जहाँ पे तुम्हारा डिसएग्रीमेंट हुआ या तुम लीड में थे और तुम्हारी बात नहीं मानी जा रही थी, तो हाउ डिड यू हैंडल दैट? Okay, yeah. So there was one situation. Again, I was supposed to. It was kind of a similar situation. I was supposed to deliver a project. When I joined एक the मिनट, company. हाँ बस यही बता रहा हूँ, स्टार को दिमाग में रखना. एवरी क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड थ्रू स्टार. In my so I went. I just so it was like the first month after my joining, and the company, according to the company, the project manager at that time, he told me that the project is just in its final stages, right? And we just have to deliver in final. I was like, okay. I went into a first meeting, and the client there sounded really unhappy. So, anyways, I dig deeper into what's left and everything, and I found out that we were delivering a lot of features that the client doesn't want, right? Okay. And a lot of things were pending. So when I found out what actually where the resources are being deployed, I found that this one resource is treating the project as freelance. So he was just Okay. thinking, this is a good feature, let's develop this, and nobody was keeping a check because the project manager wasn't technical. So I was like, okay, that's very weird, right? So what I did was in the start, I introduced Asana, Jira in the project management, so that they can know for sure that okay, you just have to work on this. But that didn't solve the problem. That guy was still doing all his tasks and other stuff as well. So Okay. that's what costly for us, right? Why would I spend his time with something? So after that, the first thing that I did was to ask him to please have 30 minutes, 40 minutes for a one-on-one with me, right? And that I tried to tell him that hey, listen, so we have this project and this is the deadline and we have a lot of things to do. And if you keep on doing this, then obviously there's a whole one resource that's not working for the completion of the project. So yeah, so I talked to him for like 30, 40 minutes and I got an affirmative response. He understood stuff, but that went on for a week and then it happened again. Right. Okay. So then I had to obviously because the one-on-one didn't work, I went on to the project manager, I asked him to help. And we had some back and forths, 2, 3 months going on, and then he was able to understand and change his mindset to actually treat this as a client project, an employee client project, and not a freelance. Nice. Interesting to hear that. Good answer. मतलब you followed the principles. तो समझ रहे हो, it was a structured answer. मुझे ज़्यादा follow up करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पे. So let's take this one a last question. उसके बाद हम audience I mean viewers के questions पे चले जाएंगे. Where was it? How do you prioritize your tasks when you have multiple deadlines? ये basically multitasking question. So okay, so when I have multiple deadlines, right? So obviously the first priority would be the closest deadline. I have to finish that off, right? Okay. But then again, it's not necessary that. So let's say I have a small task first. This is just in my personal opinion. What I personally do is if there is a deadline that has like 2, 3 days till the mail, it's not tomorrow. I'll finish off the tomorrow first, and then I'll figure out if there are many small tasks for a later deadline. I'll finish them off first so that it's off my list, and then I have more time, more. So my mind's freed up, right? So I can think about the remaining problems. That's my approach. I finish off the most urgent one first, the most urgent, most important first, and then I figure out, okay, if this task is small enough and not urgent enough for me to do it right now, and still have time to do the more urgent. So in this way, I'm able to complete more tasks in less time. Okay. You missed again the star part. सही, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास हर
एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास हर हर चीज़ में एक सिचुएशन और टास्क हो। Mhm. अगर मेरे पास नहीं होगा तो मैं ऐसे शुरू करूँगा कि I don't remember a situation where there were multiple deadlines in a very short time. I did have like ample time to complete it, but if I got into this situation, this is how I would solve it. I would first onboard my project manager and see which of the priorities are like the highest priorities. There might be a task which is due tomorrow, but it might be not that urgent. समझे? तो आई वुड नॉट डू दैट। तो पहले मैं प्रोजेक्ट मैनेजर को ऑनबोर्ड करूँगा, सी हाउ हाउ थिंग्स वुड प्लान आउट। उसके बाद देन व्हेन वंस वी हैव द प्रायोरिटी सेट आई विल टेक ऑन दोस टास्क। और अगर तुम लीड पोजीशन पे हो, यू विल आल्सो इंक्लूड के आई वुड डेलीगेट दीज टास्क टू अदर पीपल। Oh, I actually thought about saying delegation, but I thought your question's not about delegation. हाँ, मतलब हर सिचुएशन में बोलना नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, फेसबुक से कॉल आई, दे वर लुकिंग फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो डूअर बंदा ढूंढ रहे थे और मैं Ah, बता रहा था कि मैं लीड हूँ वीडी में और ये हूँ वो हूँ, तो मतलब दोबारा पूछा भी नहीं उन्होंने। तो डू यू वांट टू डू वन मोर या फिर um, I think we have time, right? कोई Yeah, let's do one. एक और कर लेता। Describe a situation where you went above and beyond your job responsibilities. What motivated you and what was the outcome? Uh, yeah, again, okay, so this is again a situation that when I was unemployed by perfect. And this is in the very early days of it. So early as in the first week, I entered the company and I see that Okay. there are currently 3-4 projects going on, and there's Mhm. no trace of a project management tool yet. So there's no visibility into what's Okay. going on, and there's no visibility into Mhm. what resources assigned to what's the workload, anything like that. And Mhm. I joined as a senior software developer, right? So it really wasn't my place to introduce something that would, enable this kind of visibility in the team, because as a Mhm. senior, I was supposed to just PR reviews and stuff like that, Mhm. software design decisions. So, but anyways, I thought that this is something that I can bring to the team. So I went to the project manager and the CTO at that time. I was like, "Hey, this is so." I had experience with Jira before joining Bytecode, Mhm. right? So I introduced Jira to them. So I was like, if we introduce this, then we're going Mhm. to have a lot of quantitative metrics in through Mhm. which we can actually make good decisions. So we would know how much time a resource takes to complete a job, or how much work can be done in 2 weeks, so like in a sprint. Mhm. And I've shared a lot of metrics, and then they were really impressed by it. So they were like, "Okay, let's try it. Why not?" Like, and so I created the first account of Jira there. I onboarded the resources, and then gave a small 30-minute session during in office. And you know, it took a little bit of time to adapt, because obviously they were already mm, doing it without the tool, so they had some learning gap there. But when it happened, then people were already talking about velocity and burn down, stuff like that. So yeah, Okay. Good answer. What was the result? people were मतलब already सही लोग talking. बात कर रहे थे, बट Yeah. फॉर हाँ, बात करने से नहीं होता ना। यू वुड से दैट the tickets which took for example a month before were now taking Oh, yeah. or या फिर we now know what estimate how to estimate our projects and we were able to give more accurate estimates to our clients. That is actually true, because we were able to figure out who's like which resources are taking more time than it should than they should. हाँ, मतलब इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं ना, कि रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छी हो गई, आपके एस्टिमेट्स अच्छे Yeah. हो गए, यू नो वेयर टू पुट योर रिसोर्सेज वगैरह, सारी सारी चीज़ें। सो मोस्टली बिहेवियरल क्वेश्चंस 1 घंटे के होते हैं, बट दिस इज़ अ गुड स्टार्ट, फर्स्ट कॉल। Let's stop here for now. Go to the questions which others might have. Recording children.
अच्छा Arif, your internet connection is very bad. So when you have your screening call in a few days, make sure you are on the right connection. Okay. वजह आपके पास सवाल था. We have 10 minutes. Thank you. Thank you. Wajahat Amin Ahmed. Any questions? Okay. Not related to the interview as well. If you have a question, हाँ मतलब generic questions भी हैं yeah. तो feel free to ask. हाँ ओके देन ये दानिश भाई हम्म अभी जो है ना एक चीज मुझे जो है समझनी है। हम्म हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं या कोई ऐसा फीचर जो हम बनाना चाह रहे होते हैं कंपनी के अंदर या खुद, हम्म तो कहा जाता है कि प्रोवाइड अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। हम्म सही है। मुझे ये बात समझ में आती है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना है, सही. लेकिन किस एक्सटेंट तक देना है यहाँ पे मुझे अंडरस्टैंडिंग में लैग करता हूँ। um, कोई एग्जांपल है तुम्हारे पास कि अभी मैं ये हुआ था? एग्जांपल हम्म है, हाँ मैं करंटली इंश्योरेंस डोमेन में था। हम्म ठीक है। वी वी काइंड ऑफ हैव कहेंगे कि हमारे पास मल्टीपल बिजनेस प्रोसेसेस है। हम्म ठीक है, क्लेम्स का है, पॉलिसी इश्योरेंस का है, और एप्लीकेशन क्रिएशन का है। तो हम्म मल्टीपल बिजनेस प्रोसेसेस है। तो अभी हमारा जो एक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा काम आया था वो हम्म ये आया था कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से लेके जाओ और हम्म उसको माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे इम्प्लीमेंट करो। सही है. ठीक है। अब इसमें मुझे बोला गया कि एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करो। ठीक है। ओके. तो मेरी नजर में ये था कि एक सिंपल सी माइक्रो सर्विस बनाना, किसी स्पेसिफिक जो टास्क को कंप्लीट कर रही हो हम्म और चीजें प्रोवाइड कर देना। लेकिन जब अब किसकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी मुझे नहीं पता, लेकिन जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था उसमें वो ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे ओके. रिलेटेड टू माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के, किस तरीके से कम्युनिकेशन होगी, किस तरीके से जीआरपीसी इस्तेमाल करेंगे या जेसन कम्युनिकेशन किस तरीके से होगी। ये हम्म सब चीजें समझने के लिए उन्होंने ये सब कुछ मुझसे मांगा था। ठीक है. तो मुझे तो एक्सटेंड समझ में नहीं आया कि आपको अगर चीज समझनी थी तो वो मैंने प्रोवाइड कर दी, लेकिन आप कह रहे हो कि ये बिजनेस लॉजिक भी इम्प्लीमेंट कर देते या वो भी इम्प्लीमेंट कर देते या कोई बिजनेस रूल अप्लाई कर देते, तो वो एक्सटेंड मुझे कभी भी समझ में नहीं आता। इससे पहले मैंने एक काम किया था। हम्म मैंने अब वो काम इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल का था। वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल का इस तरीके से था कि मुझे अपने सारी रेपोजिटरीज के जेडीके अपग्रेड करने थे और एप्लीकेशन सर्वर अपग्रेड करने थे। अब इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मैं दे ही नहीं सकता क्योंकि मुझे एप्लीकेशन को अपग्रेड करना पड़ेगा। बिल्कुल. ठीक है, समझ रहे हैं? अब हाँ. एक एप्लीकेशन मल्टीपल उसकी डिपेंडेंसीज है, मुझे सारी चीजें देखनी है। मैं हम्म करने जाऊंगा तो वो स्टेप बाय स्टेप सभी वो सब कुछ हो जाएगा, फिर हम्म जाके मैं आप उनको प्रोवाइड करूंगा। तो हम्म, वो एक्सटेंड मुझे समझ में नहीं आता कि किस लेवल तक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना होता सही है. आई हैव बीन इनटू सिचुएशंस लाइक दिस. तो पहले ये दो अलग अलग सिनेरियोज हैं और दोनों का पीओसी अलग है. तो है। जी पहले वाले में इज देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप. व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज कि आई बिलीव देयर वाज नो डॉक्यूमेंट व्हिच सेट कि अगर ये हो जाएगा तो हम समझेंगे पीओसी हो गया. ओके। इज दैट राइट? हाँ, वो तो तो नहीं होगा कभी। हाँ नहीं मतलब वो खुद कर जो बंदा पीओसी बना रहा है उसको करना पड़ता है. सही है। the the, the hard thing I learned is कि there is nothing like over communication. तो you have to communicate a lot. और जब खुद कर रहे होते हैं पीओसी कोई चीज़ नहीं होती हमें बस ऊपर से लाके दे दिया. पीओसी बेसिकली इज डेलीगेशन के भाई हमें ये काम करना है मुझे बताओ कितना एस्टिमेट लगेगा. जी इवेंचुअली उनको यही चाहिए होता है. तो ये हमारा काम होता है फिर उनसे पूछना कि सही है मैं बना तो लूँ बट पीओसी कैन बी ऑफ एनी लेंथ. आप मुझे बताएं कि व्हाट
थिंग्स यू आर ट्राइंग टू अचीव, मैं वो इम्प्लीमेंट करूँगा, एंड डॉक्यूमेंट डाउन, और फिर उनका मतलब अप्रूवल भी लो, शुड बी रिटन इन ईमेल और समवेयर। गॉट इट, बहुत सही सारे है। बहुत सारे अच्छे मैनेजर्स होते हैं जो बोलते हैं कि सेंड मी अ डॉक्यूमेंट, और कुछ लोग होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि भाई डॉक्यूमेंट अप्रूवल होना चाहिए। तो इट्स आवर जॉब टू मेक श्योर कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ, ये प्लान है, ये चीज़ें हम अचीव करेंगे पीओसी में, एंड दैट्स व्हेन वी से आवर पीओसी इज कंप्लीट। तो अगर उसमें लिखा हुआ होता कि भाई हमें एक दो बिजनेस लॉजिक भी इम्प्लीमेंट करनी है, और तुम लैग कर रहे होते, तो फिर तुम्हारी गलती होती, बट इफ इट वाजंट देयर, यू वुड हैव क्लियरली सेड दैट दिस इज व्हाट वी डिसाइडेड। और अगर आपको चाहिए, इट वुड टेक लाइक 2 वीक्स मोर, और मैं इम्प्लीमेंट करके दिखा सकता गॉट इट, सही। ये अच्छी चीज है, सही समझ गया। ठीक हूँ। है, और जो दूसरे दूसरा सिनेरियो को सिनेरियो है, थोड़ा डिस्कस करें। वैसे वो काम हो चुका है, लेकिन फिर भी बताइएगा आपकी क्या फुर्सत थी। उसमें मेरे साथ अभी हो रही है कि हम रिएक्ट अपग्रेड कर रहे हैं। हम रिएक्ट 14 पे हैं और 18 पे लाना है, और दी एक्सपेक्टेशन मैनेजर्स हैड वाज कि यार सिर्फ रिएक्ट अपग्रेड ही तो है, जस्ट पैकेजाइजेशन में जाओ और अपडेट कर दो, हो जाएगी। तो मैंने बोला ओके, लेट मी सी एंड आई विल गेट बैक टू यू। तो मैंने कोई कमिटमेंट नहीं करी। बोले फिर भी कोई हाई लेवल एस्टिमेट, मैंने बोला मुझे पता नहीं है, अभी मैं लोकल पे चला के देखूंगा, थोड़ा सा टिंकर करूंगा, उसके बाद देखूंगा, फिर मैं आपको एस्टिमेट दूंगा। जब रिएक्ट अपग्रेड किया तो वो इनकी इंटरनल लाइब्रेरीज थी, वो पुराने वर्जन पे थी। इनका एक अपना CLI टूल है, वो उसको अपग्रेड करना था। तो वो अपग्रेड होता तो नोड 18 अपग्रेड होता, तो फिर सारे जो टेस्टिंग लाइब्रेरीज हैं वो अपग्रेड होती। तो व्हाट दे वर थिंकिंग वाज 1 वीक। मैंने बोला ये एटलीस्ट 3 महीने का प्रोजेक्ट है। उस पर मैंने अपना ओ, प्लान बताया। ठीक है, ठीक है। मैंने प्लान बताया और मैंने उनको एविडेंस दिया, सही, देखें ये मैंने अपग्रेड करी, जो आपके कहने पे रिएक्ट अपग्रेड किया, ये सारे टेस्ट फेल हो रहे हैं, इनको फिक्स करने के लिए मुझे ये लाइब्रेरीज अपडेट करनी पड़ेंगी। और हाई सही है। लेवल एस्टिमेट दिया, प्लस ऐड सम बफर। और बफर ऐड करना और ये हाई लेवल एस्टिमेट देना, ऑलवेज ऑलवेज ऑन बोर्ड योर सीनियर्स, मतलब नॉट मैनेजर्स, योर सीनियर इंजीनियर्स। सही है। तो वंस दे आर ऑन बोर्डेड, जब वो वेट कर देते हैं, तो मैनेजर खुद ही खामोश हो जाता है। और सोने पे सुहागा ये होगा, इफ समवन इज एक्सपीरियंस्ड इन द कंपनी, उसका अप्रूवल ले लो कि हाँ यार ये बंदा सही बोल रहा है, तो यू आर गुड। सही, सही है, सही है। मेक सेंस। हाँ, मेक सेंस, मेक सेंस। सही है, समझ गया। तो वरना तो ये होता ही है, हमारा इंजीनियर्स का मसला है कि हम एक चीज़ करने बैठेंगे और फिर उसमें से 10 चीज़ें निकलेंगी, फिर हम वो 10 चीज़ें करने बैठ जाएंगे, और फिर मैनेजर बोलेगा यार इससे एक काम नहीं हो रहा छोटा सा। तो दैट्स ऑन आवर पार्ट। वन थिंग आई वुड एम्फसाइज इज टू कम्युनिकेट, ओवर कम्युनिकेट। ओवर कम। हम जिसको ओवर कम्युनिकेशन समझते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। तो फिर जब आप मतलब जैसे ही अपडेट्स कर भी रहे हो ना, फॉर एग्जांपल वो 3 महीने का प्रोजेक्ट हो, अप्रूव हो गया, नाउ हाँ, यू हैव टू कम्युनिकेट रेगुलरली कि भाई मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, नॉट ओनली इन योर स्टैंड अप्स बट जनरली इन योर ग्रुप्स एज वेल। क्विक विंस शेयर करो कि भाई just sharing a quick win, we upgraded this, we are halfway done, we are 1/3 done, things like that. यार ये मसला। ये मेरे साथ भी था मसला, बट हाँ, it's a मगर ये lesson learned hard way. पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम है, वो पर्सन विद टाइम लर्न करता क्योंकि बात इंटरव्यूज की हो रही थी, तो मैंने ये बोला भी कि आई एम एन इंट्रोवर्ट। उसने बोला कोई मसला नहीं, सारे इंजीनियर्स होते हैं, हाउ डू यू ओवरकम दिस। है। मतलब बहुत उसने छूटते ही बोल दिया। एक एक दफ़ा मैंने बोले कि आई एम अ गुड लर्नर, बोले कोई नहीं, सारे इंजीनियर्स होते हैं, अब बताओगे क्या क्या फ़र्क है तुम में। समझ गया, समझ गया, मैं समझ गया। ठीक, गॉट इट, थैंक यू दानिश भाई। नो वरीज, नो वरीज। आई थिंक uh, भाई। हाँ, हाँ, लास्ट मिनट है आई थिंक। एक मेरे पास एक सिर्फ ये सवाल है कि हाउ डू आई प्रेप फॉर द behavioral questions? Just another 2 seconds or we can have something uploaded. चैट जीपीटी से बोलो कि मुझे बिहेवियरल क्वेश्चन दे, एंड रिकॉर्ड योर वीडियो आंसरिंग दोस क्वेश्चन। पता लग जाएगा तुम कहाँ हम एंड आस्क कर रहे हो, और वी कैन डू अ Okay, सेकंड कॉल एज वेल। gotcha. So I think let's just wrap up meeting slot. हाँ, so thank you guys. I'll update this recording on the school community as well. बहुत अच्छी बात होगी if you people can post about this session in the community कि कैसा रहा, फीडबैक वगैरह उस पर हम improve कर सकते हैं। would highly appreciate that. दूसरे लोगों को भी मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का। So thank you guys and see you in the next call.
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।